Hello everybody, welcome to ixamBee. This is Amrita and in this video today we are going to start with the discussion of IBPS SO Law Officer examination. We are going to discuss how you have to cover the entire syllabus of IBPS SO Law Officer examination mains. We are going to discuss with the syllabus of professional knowledge that is relating to law, and in today's video I'm going to start with the first part of entire syllabus of law. But before that, to stay updated with all the videos, stay tuned with all the videos, don't forget to subscribe to our YouTube channel, and also you can write to us at hello@ixamBee.com. Visit our website www.ixamBee.com and also feel free to call on this number. Starting with IBPS SO Law Officer examination related syllabus discussion, I'm going to actually discuss with you the strategy of how you have to cover the syllabus of entire laws relating to banking laws, relating to other subjects that are a part of IBPS syllabus. And in this video, this will be a series of videos actually. एंड आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वो है बैंकिंग लॉज भी काफ़ी सारे हैं आपके सिलेबस में, सो उसे भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पार्ट 1. बिफोर दैट, वन मोर अपडेट, stay tuned to our channel constantly as we have come up with the foundation batch of IBPS SO, not only for law but also for IT, HR, AFO, marketing, Raj Bhasha. There are daily free live sessions that are going on at ixamBee YouTube channel. Prelims preparation, mains preparation. These are the time slots as you can see over here. Note them down and stay tuned to our channel for getting the benefit out of our expert faculty. Starting with the syllabus, banking laws. Banking laws में आप देख रहे हैं नियर अबाउट 9 एक्ट्स हैं जो आपका बैंकिंग लॉज का पूरा सिलेबस कवर करते हैं. बट लेट मी टेल यू, बैंकिंग लॉज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से, पार्ट ऑफ IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन सिलेबस. इसलिए इसी से मैंने स्टार्ट किया है और आज इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पार्ट 1 में हम लोग 3 एक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं: RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड सरफेसी एक्ट. ये 3 एक्ट्स को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग एक्ट्स एंड देन वी विल गो एंड कवर द रिमेनिंग सिलेबस ऑफ लॉ फॉर IBPS. So starting with first, I would take up Banking Regulation Act 1949. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्चुअली क्या है और इसको किस तरीके से पढ़ना है. अगर आपको कोई भी एक्ट शुरू करना है तो पहले मेरी एक शॉर्ट टिप हमेशा ये रहेगी कि उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, 2 लाइन का एटलीस्ट आप अच्छे से पढ़ो, हर एक कीवर्ड को समझ के पढ़ो, तो आपको उस एक्ट का सारा बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा. लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? दैट द एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क under which commercial banking in India is supervised and regulated. मतलब जो बैंकिंग का बिजनेस है इंडिया में उसको पूरी तरीके से कवर करने वाला जो एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो अब आप सोचिए IBPS के एग्जामिनेशन के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, आपको ये 2 लाइंस पढ़कर ही समझ में आ जाएगी बैंकिंग पर्सोनल के एग्जामिनेशन के लिए. सो नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट इन दिस वीडियो इज, इन सारे एक्ट्स की लिस्ट दूंगी मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस की. यू मे नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट सेक्शंस और मार्क देम समवेयर. आप इस वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू विल बी फाइंडिंग द PPT ऑफ दिस वीडियो अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन. These important sections, as you can see, the starting section 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 35, 44A, 47A, 56. अब ये लिस्ट आपके सामने है.
जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे पिक किए हैं. अब जब आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ोगे तो ये सारे सेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट किस तरीके से है कि ये सेक्शंस ज़्यादा क्वेश्चनेबल है. परफेक्टली तो हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन गेट टेंटेटिवली की पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज फ्रॉम लैंडमार्क क्वेश्चंस. अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 6 से लेके एक्चुअली सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है पार्ट 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. पार्ट 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कवर करता है? द एंटायर बिजनेस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज. The entire business of the banking companies is actually covered under part 2 of the banking regulation act. और पार्ट 2 के मेजॉरिटी सेक्शंस यहाँ पे कवर किए गए हैं. जब आप कोड एक्ट को खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे सेक्शंस यहाँ पे पार्ट 2 में से मैंने यहाँ पे उठाए हैं, बिकॉज इट डील्स विद द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 6 अप टिल सेक्शन 36A. सो यहाँ तक अगर आप देखेंगे इट इज कवरिंग पार्ट 2 ऑफ द एक्ट. रिमेनिंग दीज 3 सेक्शंस हैव बीन पिक्ड. उनकी भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है. एंड सेक्शन 44A, 47A एंड सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट. 44A बात करता है प्रोसीजर फॉर अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज. अमेलगमेशन से रिलेटेड कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं. 47A जो है that is covering actually the entire part 3A. it is actually a question which is generally asked कि ये part 3A जो है special provisions for relating to speedy disposal of winding up proceedings relating to banking regulation that can be overriding the other laws. And 56 section 56 is picked over here as it is making the act applicable to cooperative societies. So that's why this is determining the jurisdiction of this act. Therefore, this section as well is important. सारे questions की एक link बना सकते हैं and this will help you out in some or the other way. Continuing with the next enactment, as this list of sections you have already gone through. Next is Reserve Bank of India Act 1934. अब Reserve Bank of India Act 1934 भी एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है. कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेंशन हो या ना हो, बट दिस एक्ट holds its own importance as it is the central legislation for the establishment of RBI. Reserve Bank is the legislative act under which Reserve Bank of India is established. So ये भी एक landmark legislation है and it is meant to provide the framework for supervision of banking firms in India. Banking Regulation Act covers regulation of banking business in India and RBI Act covers the supervision of banking firms in India. इसके जो important sections हैं those are section 3, 4, 8, 17, 20, 21, 21A. These three are related to the RBI transacting government business, इसलिए इनको साथ में लिया है. It also at the same time these sections provide right as well as obligation of RBI to transact government business. Section 22, right to issue bank notes. 24, denomination of notes, legal tender of notes. ये सारे जो subjects हैं इन सबको ये sections में cover किया गया है. And entire currency related questions कभी पूछे जा सकते हैं. Even 3 and 4, establishment, incorporation of RBI, what is the capital of RBI. These sections are very prime sections of this enactment. Now going to the next act, that is Sarfaesi Act 2002. Sarfaesi Act came in the year 2002, and what is the main objective of this enactment? Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002. Sarfaesi Act allows banks and other financial institutions to auction residential or commercial properties of the defaulters to actually recover the loans. So
This act is specifically related to recovery of loans and is comparatively a new enactment. इसमें से भी questions पूछे जा सकते हैं. And under this act, secured creditors are actually protected. Their interests are basically protected, like banks and financial institutions. इसमें से भी sections जो important है, you may note down. Section 1 to 11 entirely you can cover. Chapter 2 of this act, which is actually dealing with the regulation of securitization and reconstruction of financial assets of banks and financial institutions. बेसिक जो ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का वो एंटायरली कवर होता है चैप्टर 2 में. सो दैट्स व्हाई चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट and that has been covered entirely in these all these sections. You may go through. पहले आप सारे acts के important sections का एक list बना लो and then you can initially go through. Here I am just giving you a rough idea of what these sections include. So chapter 2 and also penalties part we have taken up over here, because penalties is another important aspect from this enactment, because when you are enforcing recovery related provisions, you are talking about recovery of loans, then penalties is playing a very important factor in this enactment, and that's why it is questionable area, so you cannot skip it. And this is also a part of all the important sections that are there from this enactment. This is all that we had to cover from part 1 of this video. In next video I will be coming up with the part 2 of banking laws, and also will be covering next important sections from all the enactments. Before I end my video, I would like to inform you about the flat discount that is going on at ixamBee. There is a 40% off on first 50 enrollments for IBPS SO examination exclusive online courses available at ixamBee for all these disciplines, along with law, even IT, HR, AFO, marketing and Rajbhasha. Also, all the ixamBee mock tests are free at www.ixambee.com. You can anytime go on and avail the benefit of these mock tests. We are also providing live sessions at ixamBee, which is in effect since 8th of November. We are regularly conducting lectures, live sessions. In this format, you can see I have shared the details as well with you, that in our course which lectures are being dealt with which faculty. This is the legal faculty to the right. You can see Amrita Johar, me myself, Neha Dhube and Vidika Bansal. We three are the law faculty, expert faculty here, and we'll be discussing all the topics in a tentative schedule I have actually shared with you over here. Number of lectures that are required for each topic that are determined by the faculties, and it is covered in live sessions at ixamBee. For the month of December also there is a tentative schedule that I have shared with you here. These are the subjects that are being covered. And in the month of January again, the series of live sessions will be continuing. The schedule has been prepared and will be implemented by the faculty in this series, in this format. Like this, we will be covering each and every aspect, each and every corner of legal subjects by live sessions. This is our expert faculty for legal. As you can see, you can anytime interact with us, even in the comment section for this video. You can come up with your doubts and also anything related on which you require videos that you expect from us. Do write to us in the comments section. That's all, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you.